ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। तो काइनेटिक्स से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है काइनेटिक्स का, और एंजाइम काइनेटिक्स का क्या मतलब है। एंजाइम काइनेटिक्स इज द investigation of how enzymes bind to its substrates and turn them into products. Okay, so कहोगे enzyme kinetics क्या हुआ, ये किसी को पसंद नहीं आया ये ग्राफ, डेट से काट दिया किसी ने। Enzyme kinetics is the investigation of how enzymes bind substrates and turn them into products. Okay. So this is the definition of enzyme kinetics. So इसमें अब देखिए, it is the investigation of how enzymes bind with the substrates and turn them into product. So here in this definition, substrates are changing into the product. So इस definition में बात हो गई आपकी rate of enzyme reaction की, ठीक है, rate of enzyme reaction. And what is it? Rate of enzyme reaction. The rate of enzyme reaction is measured by the amount of substrates changed or amount of products formed during a period of time. It is the rate of the enzyme reaction. The rate of the enzyme reaction is amount of substrate changed or amount of products formed during a period of time. आ रही आवाज मेरी स्टूडेंट्स? Yes, yes. Okay, so this rate is determined by measuring the slope of the tangent to the curve in the initial stage of the reaction. Suppose if you want to find out the rate of the reaction, suppose if this is the reaction, okay, this is not indicating the rate of the reaction, this graph. This graph is about internal energy change, okay, in both the states, substrate state and product state. This graph is about the activation energy barrier. Okay, this I have already explained in the last class. जो इसके पहले का टॉपिक था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में। तो ये ग्राफ आप बनाओगे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन का क्वेश्चन आएगा तब, कि एंजाइम का मैकेनिज्म क्या है एक्शन का। तो इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर द प्रोडक्ट्स। ये एंजाइम काइनेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एंजाइम मैकेनिज्म का है ये, लेकिन फिगर आया तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए एंड बी आर द सबस्ट्रेट्स, ओके, so this one is the uncatalyzed reaction, this one is the catalyzed reaction. In the presence of enzyme, these substrates are forming enzyme substrate complex, okay, and the enzyme substrate complex, as a result of this, activation energy is lowered because of this complex formation, where in the active site of the enzyme substrates are binding, and then it is proceeding downwards the direction. So the reactants are converting into the products, and this is the difference of the free energy change between the catalyzed and uncatalyzed reactions. Okay, so this is that figure. So I'm minimizing it. Make see.
Now we will discuss enzyme kinetics. Okay. So enzyme kinetics is basically the investigation of how enzymes bind with the substrate and turn them into the product. So इसमें एंजाइम रिएक्शन रेट, एंजाइम का जो रेट है रिएक्शन का, उसकी बात होगी. See. ये फिगर दिख रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हम कैसे निकालते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन? जो एंजाइमेटिक ऐसे चल रहा है उसमें मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ. सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स. सी द कंसंट्रेशन ऑफ substrate concentration, and at different substrate concentrations what is the reaction rate. So इसमें भी नहीं, आप तो ग्राफ बनाना पड़ेगा दूसरा जिसमें रिएक्शन रेट पता करेंगे. यहाँ हो गया आपका substrate concentration and time. As the time will proceed, concentration of the substrate will reduce. Okay. So suppose if this graph if it is like this, because the graph is not linear one. Okay, this is not directly proportional because the amount of substrate will keep on decreasing as the time will proceed, because in this medium you have added some amount of substrate from outside. At the initial stage the amount of substrate or the concentration of the substrate will be maximum. As the time will proceed, this substrate will be converted into the product, and then the concentration of the substrate will decrease. So the concentration of the substrate is decreasing as the time proceeding. So the rate of the reaction will be determined by measuring the slope of, slope कहते हैं, ये एक सर्कल है, इसके टेंजेंट को. Suppose if you want to find out the rate of reaction at this time point, क्योंकि हर टाइम पॉइंट पर rate of the reaction will be different. Here the rate of the reaction will be different. Here the rate of the reaction will be different. Here the rate of the reaction. At every point the rate of the reaction will be different. Why? Because at all these points substrate concentration will be different. क्योंकि substrate consume हो रहा है धीरे धीरे. यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर कम हो गया, फिर और substrate कम हो गया, और कम हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, बाद में नील हो गया. Okay. तो चूंकि rate of the reaction, enzymatic reaction is also dependent on the substrate concentration. Substrate concentration जितना देंगे, rate of the reaction will increase. चूंकि यहाँ पर substrate concentration decrease हो रहा है, तो rate of the concentration will also decrease. So how will you measure? So every time point, हर time point पर rate of the reaction will be different. That's why you are observing this thing, circular line. Okay, here. Otherwise, अगर directly constant होता तो you would have got a linear slope. So at every time point, suppose if you want to measure the rate of the reaction at this time point, then you will
extrapolate this line, you reached here. Now you will measure the slope of this tangent present at this line. और सर्कल का आपको पता है नियम मैथमेटिक्स में कि इन द सर्कल हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। टेंजेंट किसको कहते हैं? अगर टेंजेंट है तो सेंटर से जो लाइन पास होगा, द रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। कहीं भी टेंजेंट सर्कल है, परफेक्ट सर्कल, यहाँ पर टेंजेंट है, then the line passing through the center to the point where it touches the circle, this will be perpendicular 90 degree angle. Radius is perpendicular to the tangent. Then you will draw the tangent here. और उसको extrapolate करेंगे. And then you will measure the slope of this tangent. Slope हो गया this angle. Okay. अब ये टेंजेंट लाइन, ये स्लोप जो है, जितना स्टीप होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर। ये जितना कम होगा एंगल, उतना रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी लोअर। So we measure it like this. By measuring the slope of the tangent, this angle, okay, steeper the slope, greater will be the rate. अगर ये slope और ज्यादा हुआ, steep हुआ, तो rate will be higher. Then we calculate it, this line. कैसे calculate करेंगे? Because rate will be defined by the per unit time. By using this formula, the rate will be calculated. Okay. So enzyme activity is measured over a period of time, and the rate of reaction जो है वो it will fall. Okay. So most commonly as a result of fall in the substrate concentration. It is because of the fall in the substrate concentration. Okay, students, इतना समझ में आया आपको? उसके बाद ये रेट डेटा जो है सो ये एंजाइम काइनेटिक एनालिसिस के द्वारा प्राप्त कर सकते हो आप। एंजाइम काइनेटिक्स करने के लिए, स्टडी करने के लिए ये एंजाइम का ऐसे से प्राप्त कर सकते हैं। ये डिफरेंट, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मेजर किया डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। 1913 में there was a great scientist, biochemist, a pair of biochemists. The name was Michaelis and Mentene. One fellow's name was Leonore Michaelis, another's name was Maud Leonora Mentene in 1913. नाम है छोटा इसका Michaelis and इसका कली Mentene. सॉरी, इनके नाम पर इन्होंने ये एक मॉडल दिया, माइकलिस मेंटेन मॉडल, और यही माइकलिस मेंटेन इक्वेशन कहलाता है, दिस वन, एंड दिस इज द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट Km. तो they provided the major contributions, okay, into this enzyme kinetics, and this has become the basic law of the enzyme kinetics. So यहाँ पर आपको
इसको समझने के लिए आपको फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मिटा दूं, एंजाइम काइनेटिक्स समझ गए, इसको मिटा देता हूं। सर। The contribution of these two scientists by giving this hypothesis is that enzyme reaction occurs in two phases. First one is the formation of enzyme substrate complex. And this is reversible. Enzyme substrate complex can be dissociated and it can be associated with the substrate. It will depend on the concentration of the substrate. Okay. So, and this ES, enzyme substrate complex, goes under catalysis to yield enzyme plus product. And the product dissociates from the enzyme. So this was given by this Michaelis-Menten model. In this first substrate you have binds with enzyme reversibly, forming enzyme substrate complex. And this enzyme substrate complex is sometimes called Michaelis-Menten complex also, in their honor. अगर कहीं Michaelis-Menten complex है, कंफ्यूज नहीं करना, समझ जाना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ओके, और एंजाइम जो कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को after this formation of enzyme substrate complex, enzyme then catalyzes the chemical step in the reaction. A chemical step in the reaction, it will catalyze and releases the product. So this has been given by this model. So now the question arises that how fast the substrates are getting converted into products, because the enzyme is the mediator, the facilitator. So some of the properties of the enzymes also responsible for it, and some of the properties of the substrate also responsible for it. Yes, both are responsible. See, enzyme rate depends on two factors. First, the solution condition and the substrate concentration. जिस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रहा है उस सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है? फॉर एग्जांपल, उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, प्रेशर क्या है। तो जनरली प्रेशर पूरे धरती पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन प्रेशर भी वजह है। फिर द सेकेंड फैक्टर इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। As the substrate concentration falls, rate of the reaction decreases. So it is not a linear relationship. At every second, substrate concentration is falling. It is decreasing. So every second, rate of the reaction is also diminishing. It is reducing. Okay, it is getting lowered. Okay. And to find the maximum speed or the maximum velocity
of an enzymatic reaction, substrate concentration should be maximum, and maximum का कोई limit नहीं है. Substrate concentration should be infinite for that, because at every second substrate concentration is falling. So यह एक ideal condition है that any enzymatically catalyzed reaction that can never achieve its maximum velocity. Vmax is the ideal condition. It is never achieved. You can have 70% of this, achieve 80% of this, even 90%, but never 100%. So it is advantageous for us and it is informative for us that what is the concentration of the substrate at which 50% of this maximum velocity is achieved. So what is that substrate concentration? When we get half of Vmax, you can see in this picture, this is the Vmax limit, maximum velocity, and you keep on increasing the substrate concentration after a certain time point. Even if you keep on increasing this substrate concentration, the velocity or the rate of the reaction is not increasing or only increasing by minuscule of the magnitude. पहले तेजी से बढ़ा, उसके बाद बहुत ही कम हो गया बढ़ना reaction rate. Even if you keep on adding substrate, more and more substrate, and you keep on increasing more and more substrate, you will get a plateau, because all those enzymes available in this reaction mixture, the solution, all of them are saturated. They become saturated with the substrate. Okay. So no more enzymes are available. Even if you give extra amount of substrate in it, the substrate will remain in the solution unutilized. Okay, as the time proceeds, more and more products will be formed. The same enzyme, their active sites will become free. Then the substrates, they will get other substrate, they will get the chance to get into the active site, and they will be converted into the products. So even if you increase the substrate, if you keep on increasing the substrate concentration, you never achieve maximum of velocity of this enzyme catalyzed reaction. तो आप इसको Vmax को मेजर करते हैं, फिर Vmax by half को मेजर करते हैं कि वो कौन सा कंसंट्रेशन है जिस पर half of the Vmax is achieved. स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Because saturation is happening. As the substrate concentration you are increasing. More and more of the free enzyme is converted into substrate bound enzyme substrate complex. And at the maximum reaction rate, that is the Vmax of the enzyme, all the enzyme active sites are bound to substrate, and the amount of ES in the same as the total of amount of the enzyme. So एक और फैक्टर है कॉलिजन रेट, क्योंकि सारे ES अगर जितने भी एंजाइम है सब सेचुरेट कर गए हैं, तब Vmax अचीव किया जा सकता है ऑन दैट। लेकिन
एक साथ सारे एंजाइम के एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से फील्ड हों, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से सॉल्यूशन मिक्सचर में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनके एक्टिव साइट है। ऐसा तो नहीं कि पैरेड कर रहे हैं एंजाइम्स कि एक साथ, मान लो इसमें 1000 molecules of enzymes is there, and if you supplied it with suppose 10,000 molecules of substrate, enough of substrate है, तो सारे के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक साथ एक्टिव साइट में फील्ड हो जाए और एक साथ प्रोडक्ट बने, फिर एक साथ खाली हो, फिर एक साथ 1000 एंजाइम मॉलिक्यूल्स के एक्टिव साइट फिर सबस्ट्रेट के साथ सेचुरेट कर जाए, फिर एक साथ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो। नो, क्योंकि ये रेट बहुत फास्ट है, सेकेंड के अंदर हजारों मॉलिक्यूल, लाखों मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। तो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट ऑक्युपाई हो रहा है, तुरंत खाली हो रहा है, ऑक्युपाई हो रहा है, तुरंत खाली हो रहा है, ऑक्युपाई हो रहा है, तुरंत खाली हो रहा है। ओके, so now it depends upon the collision between enzyme and substrate, whether because of that collision the enzyme is getting filled with or getting occupied with substrate or not, whether that collision is fruitful or unfruitful. If that, and that is termed as diffusion rate. If as a result of that collision, enzyme is interacting with substrate, then product will be formed. So it is not possible that at one point of time, all the substrate will collide with all the enzyme molecules available, and all of them will, all of those substrates who have collided will get their chance to fit into the active site as a result of those collisions. So what happens? Some of the collisions की वजह से एक्टिव साइट में फिट हो गया और वो रिएक्शन प्रोसीड कर गया और फिर तुरंत एक्टिव साइट खाली हो गया। अब वो फिर से अवेलेबल है सेकेंड कॉलिजन के लिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखिए, इसमें आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन बताएंगे, बहुत मैथमेटिक्स हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लोगे, किसको? माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को। और ये वही चीज है नीचे वाला। तो इसको